The Delhi gang rape case. The sixth accused, who till now was produced today at the juvenile board, and now he has been adjudged declared juvenile by the Juvenile Justice Board, that on the basis of the school certificate admitted by the school principal. News which would not be taken kindly by many who'd been asking that this juvenile who committed rape, one of the most heinous of crimes, should have done the time of what he committed. But right now the latest that we are breaking is that the sixth rape accused has in fact been declared a juvenile. That means he would not get more than 3 years in a reform home. A big blow to people who've been demanding that the sixth accused should have also been tried as an adult, as he is only months away from attaining adulthood. My colleague Atir Khan is also going to get us the latest details, but breaking this news at this point of time is Ankit Tyagi. Ankit, a big blow to all of those who expected that at least the Juvenile Justice Board will go ahead for a bone ossification test, but it seems on the basis, just merely on the basis of the certificate, the school certificate put forth by the principal, the sixth accused in the Delhi gang rape case has now been declared juvenile. Well, absolutely, Preeti. The Juvenile Justice Board has taken in account the certificate, the documents that were given by the school principal. According to that, his age has been determined as 4th June 1995 as his date of birth. That makes him 17 years, 6 months and 6 days old. So he is yet 5 months, 24 days away from being an adult, and that is why the court has pronounced him a juvenile. Now, the court has also said that the Juvenile Justice Board has also said that according to the Supreme Court guidelines, if there is a certificate from the school that shows the date of birth, then there is no need for a bone ossification test. So they have cited one ruling from the Supreme Court on which they are saying now there is no requirement for the bone ossification test. Although the lawyers from Subramaniam Swamy, those who are representing Subramaniam Swamy, they also had come here. They would be challenging this order in the higher court. But as of now, the big breaking story is that the sixth accused has been declared a juvenile, and he will now only be tried into the Juvenile Justice Board. You know, just stay with us, Ankit. Being tried with the Juvenile Justice Board also clearly means that the sixth accused in the Delhi gang rape case now will get away with not more than 3 years in a reform home. Atir Khan, our associate editor crime, also on the phone line with us. Atir, we fail to understand at this point of time, keeping in mind how heinous the crime was, why was a bone ossification test denied? Because we have seen in the past that it has come to be crucial in certain cases. Well, that's right, Preeti. This ruling was on the expected lines. The reason being the Juvenile Justice Act and the Delhi rules clearly mandate that if there is a school certificate and the board is convinced that it is authentic and there's no dispute about it, then there is of course no need for the bone ossification test. But let me tell you that this ruling is also detrimental in one way, that it will have an impact on the overall trial also. Exactly. We know that there are 5 other accused, Preeti, who will be going for the trial, and they will try to shift the blame of the crime onto the juvenile and get away with a lesser punishment. So it is a wide-ranging impact this ruling is going to have. The only hope now remains is the Subramaniam Swamis challenging this ruling in the higher court. A very bad precedent at this point of time, Atir, which has come out, hasn't it? Because at this point of time, keeping in mind the rarest of rare cases this was, all of India was watching very closely whether or not the sixth accused will get away. Why is it that the court this time did not seem it proper? Ironic, Preeti. All right, Atir, stay on with us. Atir, stay on with us. On the phone line with us is the victim's father who is joining us. सर, बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने का. हमने आपसे बलिया में भी बात की थी सर. आपने सिर्फ एक चीज बोली थी और वो कहा था कि जो जुवेनाइल है, जो अपने आप को कम उम्र का है, वो जाने ना पाए, और वो ही आज हुआ है. हाँ जी. कुछ कहना चाहेंगे सिस्टम से? हाँ जी, हाँ जी. अगर उसका कागज के हिसाब से अगर वो बालिग है तो हम उसको नहीं मानेंगे. कोर्ट मान रही है, ठीक है. इसके लिए हम चाहे कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी जा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि अगर जुवेनाइल है वो कैसे है, उसका बोन टेस्ट तो हुआ नहीं अभी तक. हाँ जी.
आपको लगता है सर कि कम से कम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट तो करना था, बोन टेस्ट तो करना था? हाँ जी, ये बोन टेस्ट तो करना था, लेकिन अभी तक पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कागज के हिसाब से तो मानने का नहीं, चाहे कहीं भी जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम जैसे भी मिलेंगे। कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं जो स्कूल का कागज है वही सब कुछ सही है। सर आपकी आज क्या मांग है? हमें तो सबसे पहले मांग है कि वो जो जुवेनाइल घुसखोर आना उसी को फांसी पर लटकाया जाए, और नहीं तो जनता के सामने दे दिया जाए, पता लग जाएगा क्या है वो। आपको बुरा लग रहा है कि आपके साथ कि जो हुआ आज, जो ये रूलिंग आई है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से, थोड़ा बुरा लग रहा है? क्योंकि एक वक्त था कि पूरा देश आपके साथ था। थोड़ा बुरा लग रहा है कि कम से कम एक बोन टेस्ट तो कराना चाहिए था देखने के लिए। वो करना ही पड़ेगा, देखते हैं, वो तो जैसे भी करना पड़ेगा। कोर्ट में हम भी जाएंगे, क्या करेंगे। सर 3 महीने पहले एक महीने पहले जब आप बलिया में थे, आपने एक सवाल किया था भारत के प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, दिल्ली की पुलिस कमिश्नर से आपने एक सवाल किया था कि ये छठा जाने ना पाए, क्योंकि उसने वैसा ही किया है जो पांचों ने किया है, चाहे बुरा किया हो आपकी लड़की के साथ। हाँ जी। आज कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कह तो रहा हूँ कि हम सबसे यही कहेंगे, वो कुछ भी नहीं है। जुवेनाइल नहीं अपने आप को घोषित कर रहा है, चाहे कोई भी उसका साथ दे रहा है, वो गलत कर रहा है। क्योंकि हमारी बेटी के साथ नहीं, तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है, जो भी बचा रहा है उसको। वो जज अगर है तो जज की भी तो बेटी होगी, उसकी भी तो कोई लड़की होगी घर में, उसके साथ होगा तो क्या करता वो? कहते तक नहीं जुवेनाइल है ये। आपको लगता है कि यहाँ से बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया गया है? क्योंकि अगर आगे कुछ ऐसा हो, सबको लगेगा कि ये तो अगर 18 की उम्र से कम है ये तो निकल जाएंगे। नहीं निकलने तो किसी भी तरह दिया जाएगा, जैसे भी होगा देखा जाएगा। अभी आपका आप क्या करना चाहेंगे? किससे बात करना चाहेंगे? अभी आप किससे इल्तिजा करना चाहेंगे? अभी तो मैं आपसे सुना हूँ, इसके बाद अब सोचेंगे कि हमें करना क्या है। पर आप जाने नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मरते दम तक। तो आप मरते दम तक लड़ेंगे कि जो छठा है, जो जुवेनाइल घोषित हो गया है, वो भी एक मेजर अडल्ट की तरह ट्राई हो इस केस में? हाँ, हो करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, बहुत बहादुर है आप, और आप जो ये जंग जारी रख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है इस वक्त सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। साहब ने बहुत अच्छी तरीके से सुनी, बहुत ढंग से सुनी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी बहुत कोऑपरेट किया और सभी डिफेंस काउंसिल ने मिलकर आर्गुमेंट कर रहे हैं। इस पर चार्ज पर आर्गुमेंट, उस पर आगे आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। अब इसमें इस केस में अब कल भी, क्योंकि अर्ली सुना जा रहा है, जल्दी सुना जा रहा है, इसलिए इसमें डेट ऑफ हियरिंग कल है। कल 12 बजे इस केस को आर्गुमेंट ऑन चार्ज पर ही सुना जाएगा और ये बहस चलेगी, आगे बहस होती। हाँ, वो जो धाराएं हटाई हैं वो उन्होंने अपने आप हटाई हैं, उन्होंने अपनी आप धाराओं को उनको हटा लिया है, ड्रॉप कर लिया है। ये प्रोविजन है, देखिए ये प्रोविजन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कभी भी कोई चार्ज स्टेज पर और वो चार्ज जो सेक्शन है वो ड्रॉप की जा सकती है। नहीं लगता है तो आई थिंक सो। थैंक यू। 364 IPC और 392 सेक्शन, और डिटेल ऑर्डर मिल जाएगा उस संबंध में। डिटेल ऑर्डर मिल जाता है, दस्ती ऑर्डर मिल जाता है। ऐसा प्रोविजन है कि हमें दस्ती ऑर्डर मिल जाए, और दस्ती ऑर्डर मिलने के बाद हम इसको कर लेते हैं, उसको आगे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्ज पर बहुत अच्छा आर्गुमेंट हो रहा है। चार्ज पर ही स्टेज, ये स्टार्टिंग स्टेज होती है चार्ज पर, जिससे पता चलता है सारे केस में क्या है क्या नहीं है। सभी डिफेंस काउंसिल को सुना जाता है, डिफेंस काउंसिल को सुनने के बाद ही जज साहब को भी पता चलता है इस केस में क्या है। देखिए, किसी केस को सेंटीमेंट के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाता। नो केस कैन बी डिसाइडेड ऑन सेंटीमेंट्स। और स्पीडी ट्रायल का ये मतलब भी नहीं है कि बिना सुने, बिना समझे, देखिए लॉयर्स को पुलिस फाइल चार्जशीट तैयार करती है, उसको पढ़ा जाता है, लॉयर्स उस पर आर्गूमेंट करते हैं, जज साहब उस फाइल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं। स्पीडी ट्रायल का ये पार्ट है, नो डाउट इन इट, लेकिन उस पर बिना सुने, बिना किसी चीज को नहीं किया जा सकता। सबको सुनने का मौका दे रहे हैं जज साहब, सुनना जरूरी है। ये बहुत थैंक यू सर।
Ankit Tyagi, my colleague, is joining us on this disturbing bit of breaking news that we are tracking right here on Headlines today. Let's get our viewers up to speed with the breaking news in the gang rape Delhi case. The sixth accused has been adjudged a minor by the Juvenile Justice Board purely on the basis of the school certificate which was provided by the principal of his school, which in effect means that the sixth accused, who was barbaric, as even the friend of the victim has gone on record to say more barbaric than the rest of the five, will now get only 3 years at best in a reform home. After that, he will walk free. All because he is, as per the certificate, 5 months and 24 days less to attain adulthood. Ankit Tyagi is with us right now. Ankit, it's a huge blow to everybody who had been hoping that the sixth accused would also get the same amount of punishment. Right now, not more than 3 years in a reform home, and then he's a free man. Crucial development, this, Preeti, in the Delhi gang rape case. The sixth accused, according to the register in the school that he had attended, that the principal, the copy of which the principal had submitted in front of the Juvenile Justice Board. According to that, his date of birth has been pronounced as 4th June 1995. That makes him only 5 months 24 days less than being 18. And the court also went on to say that according to the Supreme Court ruling, if there is a school certificate, then there is no need for a bone ossification test. So they have also ruled out the bone ossification test, the application for which the Delhi police had put in. Now, what this will mean is that this sixth accused, which Delhi police sources have been saying was one of the most brutal, will only be tried under the Juvenile Act, and the maximum that he can get for his crime is 3 years, that too in a reform home. And as our associate editor Atir was telling us before, that this will also affect the trial in the other accused. Now their defense can more or less put put more on this child, because he will be going scot-free in 3 years, and they will ask for a lesser punishment of the other accused. So very crucial development coming here at the Juvenile Justice Board, and this will have far-reaching effect on this case. Subramaniam Swamy, who has filed a petition in this case, his lawyers spoke to us a little while earlier, and they said they will be challenging this in the higher courts. But Ankit, stay on with us. Will it have a far-reaching effect, a far-reaching impact? Well, it already does. It already has. We spoke to the father of the Braveheart, the Delhi gang rape victim, was shot a while back, and today he's a broken man. He is angry, but he said he will fight and make sure that the juvenile will not get away. Let's listen in to the victim's father. कुछ कहना चाहेंगे सिस्टम से? हाँ जी, अगर उसका कागज के हिसाब से अगर वो बालिग है तो हम उसको नहीं मानेंगे। कोर्ट मान रही है, ठीक है, इसके लिए हम चाहे कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जुवेनाइल है वो कैसे है, उसका बोन टेस्ट तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ जी, आपको लगता है सर कि कम से कम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट तो करना था, बोन टेस्ट तो करना था? हाँ जी, ये बोन टेस्ट तो करना था, लेकिन अभी तक पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कागज के हिसाब से तो मानेंगे नहीं, चाहे कहीं भी जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम जैसे भी मिलेंगे। कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं जो स्कूल का कागज है वही सब कुछ सही है। सर, आपकी आज क्या मांग है? हमें तो सबसे पहली मांग है कि वो जो जुवेनाइल घुसखोर आना, उसी को फांसी पर लटकाया जाए, और नहीं तो जनता के सामने दे दिया जाए, पता लग जाएगा क्या है वो। आपको बुरा लग रहा है कि आपके साथ कि जो हुआ आज, जो ये रूलिंग आई है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से, थोड़ा बुरा लग रहा है? क्योंकि एक वक्त था कि पूरा देश आपके साथ था। थोड़ा बुरा लग रहा है कि कम से कम एक बोन टेस्ट तो कराना चाहिए था देखने के लिए। वो करना ही पड़ेगा, देखते हैं, वो तो जैसे भी करना पड़ेगा, उसमें हम भी जाएंगे, क्या करेंगे। सर, 3 महीने पहले एक महीने पहले जब आप बलिया में थे, आपने एक सवाल किया था भारत के प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, दिल्ली की पुलिस कमिश्नर से आपने एक सवाल किया था कि ये छठा जाने ना पाए, क्योंकि उसने वैसा ही किया है जो पांचों ने किया है, चाहे बुरा किया हो आपकी लड़की के साथ। हाँ जी, आज कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कह तो रहा हूँ
कि हम सबसे यही कहेंगे, वो कुछ भी नहीं है, जुवेनाइल नहीं अपने आप को घोषित कर रहा है, चाहे कोई भी उसका साथ दे रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि हमारी बेटी के साथ नहीं, तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है जो भी बचा रहा है आपको। वो जज अगर है तो जज की भी तो बेटी होगी, उसकी भी तो कोई लड़की होगी घर में, उसके साथ होगा तो क्या करता वो, कहते तक नहीं जुवेनाइल है ये। आपको लगता है कि यहाँ से बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया गया है, क्योंकि अगर आगे कुछ ऐसा हो सबको लगेगा कि ये तो अगर 18 की उम्र से कम है ये तो निकल जाएंगे। नहीं निकलने तो किसी भी तरह दिया जाएगा, जैसे भी होगा देखा जाएगा। अभी आपका क्या, आप क्या करना चाहेंगे, किससे बात करना चाहेंगे, अभी आप किससे इल्तिजा करना चाहेंगे? अभी तो मैं आपसे सुना हूँ, इसके बाद अब सोचेंगे कि हमें करना क्या है। पर आप जाने नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मरते दम तक। तो आप मरते दम तक लड़ेंगे कि जो छठा है, जो जुवेनाइल घोषित हो गया है, वो भी एक मेजर अडल्ट की तरह ट्राई हो इस केस में? हाँ हो, करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, बहुत बहादुर है आप, और आप जो ये जंग There you have it, a very brave father saying till his dying day he will fight for the respect for his daughter and make sure that the sixth juvenile in this case, of course, who's been declared now, does not get away. But today, it does seem that the systems that are in place let a father down who is only looking for justice for his daughter who fought bravely. She was raped on the 16th of December. After a 10-day fight, 12-day fight, she passed away, but her father wants justice, and he wants that the sixth accused, who today has been declared a juvenile, be meted out the same justice as the other five. Ankit Tyagi, who's at the Juvenile Justice Board, has been reporting on this story, is reporting live right now. Ankit, we do know that this decision by the Juvenile Justice Court will be appealed, but will it tantamount to anything, or we can safely say today, and sadly, that the sixth accused will get away with no more than 3 years? See, Subramanian Swamy will be appealing against this order, and now all the eyes would be on the High Court to decide the definition for juvenile, and only then we would be able to know if it will have some impact on this case also. But as of now, with what it has come out, it just seems that it will have serious repercussions. This sixth accused, there was a lot of anger among the public also regarding this entire issue of the juvenile, and they wanted him to be tried. But with the existing laws as of now, he would be tried under the Juvenile Justice Board. And as we have been telling our viewers, the maximum that he can get is 3 years. As we have been talking about this, Preeti, it will also have the some sort of an impact on the cases of the other 5 accused. Now their defense lawyers might try and put the most blame on this and try for a lesser punishment for their clients. So this will have far-reaching case impact on not only on the verdict of this juvenile, but also on the entire trial. We will have to wait and see. The next date of this case would be in the Juvenile Justice Board. They have completely denied the police. The police had requested for a bone ossification test, citing one Supreme Court ruling. They have said that since they have a school certificate in it, and that is the reason there is no requirement for a bone ossification test. So as of now, all those are closed. The police will have to file an appeal again. And sadly, the precedent of this trial, which the world is watching very closely, has already been set. The sixth accused in this case has been declared a juvenile. Let's get in more reaction. On the phone line with us at this point of time is women's rights activist Purnima Advani. Ms. Advani, today somewhere down the line when we spoke to the father, we could hear it in his voice that the system that there is has let a father down who is only wanting justice for his daughter. That's right. But if we have to look at it from the perspective of law, the courts, their role is to interpret the law. And therefore, unless and until the law is changed, one is bound by the earlier norms or whatever the legal position is regarding the definition of juvenile. Having said this, it's extremely important that law must understand and keep pace with the dynamics of society. And this is where we are a failure. There is a stark gap between societal exigencies and
the Parliament taking cognizance of such exigencies and amending the law. The law remains stagnant. I'm talking of social legislation. On the other hand, we see certain financial newly brought out legislation find that there are amendments rapidly happening every 6 months, every quarterly. But because that concerns finances, the money market. But here where human beings are involved, where the society is involved, it's all the more important that the Parliament must take cognizance of social requirements and be in tune with social dynamics. There is a wide gap. And this is how society suffers. So now, the boy who has spearheaded this entire Delhi gang rape, he is being declared a juvenile, and therefore there is going to be a strong element of leniency towards him. Having said that, I do not agree with the second part of the statement you made, that because of that, all the other 5 accused, their case becomes weaker. No. I think... If the Justice Verma Committee, do you reckon if the Justice Verma Committee had touched upon the Juvenile Justice Act and had made that clear, today we might not have seen this day? That's right. That's what I'm saying. These social amendments in social legislation have to be made very rapidly. Otherwise, they keep languishing. And then a day is reached where we can't do justice. Law cannot mete out justice to the society. And that's the unfortunate position where we are. I hope. All right.